Hello everyone. Last time we have seen the three properties: time shifting, frequency shifting, duality property, and we have seen the problem based on these three properties. Now let us see this next three property. We are going to see differentiation property, then convolution property, time convolutions, and then Parseval theorem. Okay, so let us see differentiation property. If x of t having Fourier transform x of ohm, then Fourier transform dx of t of 1 dt is j ohm into x of ohm. Okay, this is a differentiation property. जैसे हम लोग Laplace transform of d dt of x of t is s x of s minus x of 0 ऐसा था, where s is equal to j ohm पुट करते हैं हम लोग, तो it will become j ohm x of ohm. Okay, so इसका proof हम लोग दे रहे हैं. Property same as Laplace transform वैसे ही है. The taking inverse Fourier transform, according to definition of inverse Fourier transform, it will be like this: 1 upon 2 pi minus infinity to infinity capital X of ohm e raised to j ohm t d ohm. Then if we differentiate with respect to t, we are getting dxt upon dt. So यहाँ पे भी differentiate करते थे, इसमें टाइम डोमेन सिग्नल ये है, जिसमें t है वो सिग्नल ये है, तो इसको differentiate करना रहेगा with respect to t. तो इसको डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इट इज जे होम इंटू ई रेज टू जे होम टी जी होम. ओके, एंड देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. सो इफ यू टेक द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल, इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं हम लोग, तो मतलब यू आर गेटिंग दी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, तो ये टर्म रहेगा, बिकॉज दिस इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है. ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन. तो अगर मैं इधर फोरियर ट्रांसफॉर्म लेगा तो ये इधर का इनवर्स निकल जाएगा और आपको ये मिलेगा जे ओम एक्स ऑफ ओम. ओके, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म डी एक्स ऑफ टी डी टी इज व्हाट इज जे ओम एक्स ऑफ ओम. ओके, एंड दिस इज एस एक्स ऑफ एस फॉर्म में ही है. ओके, एस एक्स ऑफ एस है, उसमें एस इज रिप्लेस बाय जे ओम लाइक दिस. ओके, क्योंकि दिस इज बेसिकली लाइक दिस फोरियर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल फंक्शंस. Based on this differentiation property, we can find out the Fourier transform signum functions. Now, how do you define signum function? Signum function is represented by hgn t, hgn of t, like this, and it has the value 1. ये नया फंक्शन है, आपके डेफिनेशन में नहीं था पहले. सिग्नम फंक्शन हैज द वैल्यू 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0. जिसका वैल्यू 1 रहता है फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0. It has a value -1 for t less than equal to 0. And उसको sketch ऐसा करता है. It has a value 1 for t. This is extended up to the infinity. It has a value 1 for t greater than 0. It has a value -1 for t less than 0. Isn't it? Like this. So ये signum functions को हम लोग ऐसे define किया. This is a definition of signum function. इसका Fourier transform निकालना है हम लोग. तो इसका Fourier transform कैसा निकालते हैं हम लोग? So we can find out its Fourier transform by using differentiation property. If you take the derivative of this signum function का derivative लेते हैं, तो derivative of signum function in this t less than 0 will be 0, because constant signal, constant का derivative क्या है, 0 है. For t greater than 0 इसका derivative will be 0. इसका derivative कहाँ पे होगा, exist होगा जहाँ पे सिग्नल चेंज हो रहा है. ओके, बिकॉज कोई भी सिग्नल का derivative कहाँ पे मिलता है आप लोगों को, जहाँ पे वो चेंज हो रहा है. जहाँ पे सिग्नल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी 0. ऐसा है. तो खाली आप लोगों को t इक्वल टू 0 को उसका डेरिवेटिव मिलेगा. ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ सिग्नम फंक्शंस इज एग्जिस्ट एट t इक्वल टू 0 एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन ऑफ एरिया 2. ओके, एंड देयरफॉर इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं सिग्नम फंक्शन का, तो इट इज 2 del t. इसका डेरिवेटिव लेते तो ये हो जाएगा ऐसा. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इम्पल्स डेरिवेटिव लेने के बाद. ओके, एंड उसका हाइट हो जाएगा कितना, 1 से लेकर -1 हाइट कितना हो गया, 2 del t. del t इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज इट इज एग्जिस्ट ओनली एट t इक्वल टू 0. del t सिग्नल इज एग्जिस्ट ओनली एट t इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर द डेरिवेटिव ऑफ सिग्नम फंक्शन इज 2 del t. And therefore, once you know the derivative of signal function, we can find out its Fourier transform. So Fourier transform signal function is डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी डी टी. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या लेते हैं हम लोग, तो जे ओम इंटू सिग्नम ऑफ ओम. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल टी. दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल टी इज 1. ऐसा है. तो देयरफॉर एच जी एन ऑफ ओम मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नम फंक्शन.
Fourier transform of signum function is equal to 2 upon j ohm. ऐसा है 2 upon j ohm. So signum function का जो Fourier transform है that is equal to 2 upon j ohm. Okay, तो Fourier transform पूछते हैं. Okay, तो according to the Fourier transform property, इसका Fourier transform हम लोग का j ohm into signal in frequency domain. So signal in frequency is j ohm, and that 2 into Fourier transform del t, and therefore it will be like this. This is the Fourier transform signal function. Now let us see the Fourier transform unit step function. Just now we have seen the Fourier transform signum function. Using signum function Fourier transform, we can find out the Fourier transform of unit step functions. Unit step functions, as you know that it has a value 140 greater than equal to 0, it has a value 040 less than 0. This unit step functions can be represented in terms of signum function like this. U of t is equal to half plus half HGNT. How it is? Because HGNT has the value 1 for t greater than equal to 0. So what is the value of U of t for t greater than equal to 0? The HGNT is 1, so therefore this is half plus half. U of t will become equal to 1 for t greater than 0. And HGNT is minus 1 for t less than 0. So this will become minus half. Minus half and plus half will become, U of t will become 0 for t less than 0. Like this. So in this way we'll express this, we'll represent this U of t in terms of signum function. And then we'll take its Fourier transform. Fourier transform U of t is U of ohm. Fourier transform half plus Fourier transform half into Fourier transform HGNT. Fourier transform half is, the last time we have seen Fourier transform A is what it is, 2 pi A del ohm. Okay, so A is half now here, 2 pi half del ohm is the Fourier transform constant. Fourier transform constant A is 2 pi del ohm. This is the formula. So Fourier transform half is 2 pi half del ohm plus half. Fourier transform HGNT is 2 upon j ohm. So finally half of gets cancelled, and what is the Fourier transform U of t is? Fourier transform U of t is pi del ohm plus 1 upon j ohm. This is a Fourier transform of the unit step functions. Now let us see the next property. Property number 5 is time convolution. If x of t having Fourier transform x of ohm, h of t having Fourier transform h of ohm, then Fourier transform or convolution of x of t and h of t is x of ohm into h of ohm. Okay, so as you know, इसका proof देखना है अभी हम लोग को. So let us see the convolution of x. So as per definition of convolution, x of t convol h of t is equal to integral of x of tau into h of t minus tau d tau. Okay, and we have to take the Fourier transform of these functions. So Fourier transform of these functions is equal to this function as it is, and then we'll integrate it. We'll put this using the definition of Fourier transform. It will be like this. Okay, so this is the functions, integral functions into e raised to minus j omega t dt, and then we'll do the substitution. T minus tau is equal to lambda, so t is equal to lambda plus d tau, dt is equal to d lambda. So here x of tau, okay, integral of x of tau into integral of, in second integral will integrate with respect to lambda, first integral integrate with respect to tau. Okay, so x of tau d tau, and then in second integral it is x of h of lambda. Okay, here it is e raised to minus j ohm, t is replaced by lambda plus tau d lambda, and then this will be converted into two separate integral like this. In one integral the variable will be tau, second integral variable will be lambda, and it is equal to x of ohm into h of ohm. This is the proof of convolution theorem. Okay, the property number 6 of convolution, this Fourier transform is Parseval theorem. Okay, Parseval theorems is represent how to calculate energy in time domain and how to calculate energy in Fourier domain. Okay, so Parseval theorem says that the energy of signal x of t is equal to 1 upon 2 pi times the area under the square of the magnitude of Fourier transform of signal x of t. Okay, so this statement will be converted in mathematical form like this: 1 upon 2 pi times
area under the when you integrate the any signals, you means you are finding the area. Okay, so area under the square of the magnitude of Fourier transform signal x of t. So energy is equal to, in time domain we can find out the energy like this, integral of mod of x of t square dt. In Fourier domain we'll find out the energy of the signals like this, 1 upon 2 pi integral of mod of x of ohm square d ohm. Okay, and this is stated by the Pascal theorem. How to calculate the energy in Fourier domain, that is stated by the Pascal theorem. Okay, and this mod of x of ohm square upon 2 pi is called as the energy density spectrum. Okay, this is called as energy density spectrum. What is energy density spectrum is how the energy is distributed among the various frequency component. Okay, we have seen any signal is made up of number of sinusoidal component. Okay, तो जैसे कि एक सिग्नल से अगर आप लोग 4 साइनोसॉइडल सिग्नल से बना हुआ है ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 f4. ओके, तो f1 का एम्पलीट्यूड कितना है, ओके, उसके हिसाब से जो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी f1 है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसके हिसाब से उसका एनर्जी मिलेगा हम लोगों को. ओके, तो टोटल जो सिग्नल है x ऑफ t विच इज मेड अप ऑफ 4 साइनोसॉइडल कंपोनेंट f1 f2 f3 f3. ओके, तो हाउ मच f1 कंट्रीब्यूट एनर्जी इन x ऑफ t, how much f2 contribute, how much f3 contribute, how much f4 contribute, that is stated by the energy density spectrum. So energy density spectrums stated that how the energy of these signals is distributed among various frequency component. Okay, तो suppose एक सिग्नल का एनर्जी आप लोग का 5 जूल्स है, तो उसमें से and it is made up of 2 सिग्नल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट f1 and f2. तो f1 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना एनर्जी, 5 में से कितना एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, f2 जो सिग्नल है वो कितना एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है. दिस इज वी नो फ्रॉम दिस एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम. ओके, विच इज बेस्ड ऑन दिस पास्कल थ्योरम. ओके, नाउ इट energy density spectrum is represent a distribution of energy of signals among the various frequency component. जैसा मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि it distribution of energy of signals among various frequency component. Okay, that is we call the energy density spectrum. Okay, hope you will understand energy density spectrum. Okay, एक सिग्नल्स का एनर्जी 5 जूल है जैसा मैंने बोला, और वो 2 सिग्नल से बना हुआ है हैविंग फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2. तो ये जो 5 जूल्स है उसमें से f1 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, f2 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. ओके, तो ये अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है तो दैट इज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस, एनर्जी रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम. ओके, नाउ प्रूफ ऑफ दिस पास्कल थ्योरम. एनर्जी इन टाइम डोमेन ऐसे निकालते हैं हम लोग, उस पर से एनर्जी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन कैसे ऑब्टेन करते हैं, दैट इज अ प्रूफ. सो दिस इज एनर्जी इन टाइम डोमेन, उस पर से एनर्जी इन फोरियर डोमेन कैसे ऑब्टेन कर रहे हो देख रहे हैं. तो एक्स ऑफ टी स्क्वायर वी कैन रिप्रेजेंट एक्स ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ माइनस टी, या तो एक्स ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ माइनस टी. ओके, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, x of minus t into x of t. Okay, so this is according to, this is x of minus t and this is x of t. According to inverse Fourier transform, x of t we can represent like this, x of ohm into e raised to j ohm t d ohm. Okay, this is x of minus t, and then 1 upon 2 pi integral of x of t raised to j ohm x of ohm into, this is just changing the order of integrations किया हुआ है. Okay, and then we are getting x of ohm and this will be x of minus ohm because here it is minus t. Okay, x of t into x of t, 1 x of t will be replaced by the inverse Fourier transform definitions, and then we'll changing the order of integrations. This x of t e raised to j ohm t, यहाँ पे माइनस रहता था तो हम लोग यहाँ पे बोलते इसको x of ohm, बट हियर इट इज प्लस है तो इट इज x of माइनस ohm, ऐसा बोला इसको. दिस x of ohm as it is, x of ohm into x of minus ohm is x of ohm square d ohm. Okay, like this is, and this is the energy we can, this is the proof of this, we can obtain the energy from time domain to energy in frequency domain. Okay, thank you.